Hello and welcome to this new tutorial. In today's tutorial, we shall talk about a very basic question, understanding whether political science is a science or not. Now, when we talk about political science, whether it is a science or not, then we have two very important arguments. The one argument is against, which basically says that political science is not a science. And the second argument we have is that some scholars believes that political science is a science, and therefore this argument is in favor of declaring political science as a science. In this tutorial, I shall talk about the first argument, that is political science is not an science. आप सबका स्वागत है इस नए ट्यूटोरियल में, और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि पॉलिटिकल साइंस असल में कोई साइंस है या साइंस नहीं है। और ये जानने के लिए हमें दो विचारों का आदान प्रदान करना पड़ेगा। पहला जो विचार दिया है बहुत से पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कि ये पॉलिटिकल साइंस एक साइंस नहीं है, और दूसरा जो आर्गुमेंट है वो इन फेवर है, wherein some political scientists believes that political science is actually a science. Political science एक साइंस ही है और उसे हमें साइंस की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा या फिर समझना पड़ेगा। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग पहले आर्गुमेंट अगेंस्ट के बारे में जानेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है कि some political scientists believes that political science is not an science. So let us talk about the first argument. Now let us take first argument which is against the political science as a science. And here we have a Buckle. According to Buckle, in the present state of knowledge, politics, far from being a science, is one of the most backward of all arts. According to him, there is no agreement regarding the methods of study of political science and the conclusion arrived at by various political scientists. In fact, there is no continuity in the development of political science because it deals with man and political institutions which are or have been changing from time to time. He further says that it is not possible to have a political experiments in the same way or we have in the case of other sciences, and therefore, according to Buckle, he rejects the claim of political science to be called as science. Well, we have a Buckle here who acknowledged that political science is one of the most backward among all the arts. And the reason why he says that political science is a backward subject is because, according to him, there is no agreement or common understanding regarding the methods which need to be followed in the political science, especially among the political scientists. And therefore, political scientists refer different methods, they follow different methods, and they come on to a conclusion depending upon the methods which they have adopted. And therefore the conclusion varies from political scientist to another political scientist. Moreover, he also says that there is no continuity in the development of a political science, and the precisely reason is because it deals with the human being and the political institutions, and these human beings and political institutions have changed time and again over a period of time. Further, he also says that it is not possible entirely to have an political experiments in the political science the way they carry out the experiment in other sciences. So basically, the argument says that you cannot conduct any political experiments because you don't have a laboratories, and to conduct the experiments what you need to have a laboratory, and political science does not have a laboratory according to the arguments given by Buckle. So therefore, Buckle eventually rejects the claim of political science calling itself as a science, and therefore many other scientists believes that political science is not an science. So following are some of the reasons which are given in support of the contention that political science cannot claim the status of science. ये जो आर्गुमेंट दिया है बकल का कहना ये है कि आज की स्थिति में जो पॉलिटिकल साइंस है ये कोई विज्ञान नहीं है, ये कोई साइंस नहीं है, बल्कि इनके हिसाब से ये बहुत
पिछड़ा हुआ, बैकवर्ड, और इनका कहने का यही कारण है क्योंकि इस सब्जेक्ट में कोई यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मेथोडोलॉजी नहीं है। जैसे कोई मन चाहे वैसे साइंटिस्ट अपनी मेथोडोलॉजी फॉलो करता है, और इसी की वजह से जो कंक्लूजन आता है वो बहुत डिफरेंट आता है हर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के स्टडीज़ में। और ये आगे ये भी कहते हैं कि इस सब्जेक्ट में कोई कंटिन्यूटी नहीं है, इसका जो डेवलपमेंट है वो अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और अमूमन बिकॉज इट डील्स विद मैन एंड ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, और जो इंसान है और उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो सोसाइटी का जो ढांचा है, ये हर एक स्थिति में बदलता हुआ पाया गया है, और उसी की वजह से उसको कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आगे ये भी कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में आप कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप प्योर साइंस में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं या फिर कोई ऑब्जर्वेशन करके जो फाइंडिंग्स निकालते हैं, ऐसी फाइंडिंग पॉलिटिकल साइंस में नहीं आ सकती है। और इसीलिए बकल रिजेक्ट्स द क्लेम ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू बी कॉल्ड एज साइंस, और इसीलिए बकल ये रिजेक्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का कि वो एक साइंस है। और इसीलिए आगे हम जानेंगे कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस क्यों नहीं है, और ये इसके सपोर्ट में बहुत से आर्गुमेंट्स दिए हैं। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट आर्गुमेंट विच talks about that political science is not an science. So the first point is there are controversies over definitions, terminology and methods of political science. It's a very simple point that whenever we talk about political science, then in political science we don't have precise universal accepted definitions about certain concepts, as well as we don't have a common understanding when it comes to the terminology in political science. Apart from definitions and terminology, we also do not have universal accepted methodology to study political science, and therefore because of lack of this commonalities and understanding and lack of universal accepted definitions, terminology and methods, political science is not in science. In fact, there is also a lot of controversies over various definitions of various concepts. So therefore political science is not a science. सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर ये है कि पॉलिटिकल साइंस में बहुत से कंट्रोवर्सीज है बिकॉज ऑफ वेरियस डेफिनेशंस, बिकॉज ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजी, या फिर जो मेथड्स जो है पॉलिटिकल साइंस में जो अडॉप्ट किए हैं स्टडीज़ करने के लिए, इसके रिलेटेड बहुत से कंट्रोवर्सीज है। ये कंट्रोवर्सी ये भी है कि जो डेफिनेशन है हर एक कॉन्सेप्ट का, ये वेरी करता है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। जैसे कि मान लो एक कॉन्सेप्ट हमने डिफ़ाइन किया तो वही कॉन्सेप्ट यूनिवर्सली दूसरा कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अपनी तरह उसको डिफ़ाइन करेगा या फिर उसको प्रोड्यूस करेगा। और इसी के चलते जो सबसे पहला जो पॉइंट सपोर्ट में आता है कि पॉलिटिकल साइंस कोई साइंस नहीं है, वो ये है कि पॉलिटिकल साइंस में बहुत से कंट्रोवर्सीज है because of various definitions, terminology और या फिर methods. Second most important point here that among the political scientists there is no general agreements regarding the definitions, scope, terminology, methods and principle of subject. Again, it is very obvious and continuation point from the point number 1 that among the political scientists, whenever it comes to defining certain concept, when it comes to defining the scope of particular concept या फिर terminology and even for that matter methods and principles, there is no commonalities या फिर there is no agreement among the political scientists on various concepts. As I said, every political scientist tries to defend or try to define certain concept and definitions according to his or her own understanding, and therefore here again the similar points can be repeated that we don't have universal accepted common understanding on various definitions, scopes, terminology, methods or principles of the subject, and therefore political science is not a pure science. दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह है कि जो हमारे पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट है पॉलिटिकल साइंस में, उनके ही बीच में बहुत से एग्रीमेंट नहीं है ऑन वेरियस कॉन्सेप्ट।
जैसे कोई डेफिनेशन ले लिया या फिर स्कोप ले लिया, मेथड्स ले लिया या फिर प्रिंसिपल ले लिया, ये जो डेफिनेशंस या स्कोप है ये बहुत वेरी करते हैं फ्रॉम ईच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। हर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट का अपना एक ख्याल होता है, अपनी एक सोच रहती है, और उस सोच की वजह से या फिर जो उसने मेथड्स अप्लाई किए हैं उसकी वजह से जो फाइंडिंग निकलते हैं वो बहुत डिफरेंट फाइंडिंग निकलते हैं। और इसीलिए अमंग द पॉलिटिकल साइंटिस्ट उनकी कोई एग्रीमेंट नहीं है ऑन वेरियस कॉन्सेप्ट या फिर डेफिनेशन के लिए, और इसीलिए ये पॉलिटिकल साइंस का भी साइंस नहीं कह सकता, बिकॉज इन साइंसेस दे हैव यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन अक्रॉस द ग्लोब। थर्ड very important aspects why political science is not a science is because different methods and approaches are open to students to conduct investigation in political science instead of a universally accepted single methods or a set of methods. Now this is again a very important point to understand, that in sciences, that in political sciences we do not have universal accepted single methods or a set of methods to carry out certain investigation. In fact, in political sciences, students are being thrown open to various different methods and approaches to conduct their investigation. So when student is going to conduct their investigation based on various methods and approaches, obviously the findings would be different from one and another, and therefore because of lack of universal accepted single methods or set of method, पॉलिटिकल साइंस इज़ नॉट एन साइंस। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि पॉलिटिकल साइंस में जो स्टूडेंट को कभी एक्सपेरिमेंट करने की जो बात आती है या फिर उनको अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना है तो कोई यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिंगल मेथड नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स को एक डिफरेंट मेथड दिया जाता है या फिर डिफरेंट अप्रोच दिया जाता है जो बहुत डिफरेंट होता है, और इसी की वजह से हर एक स्टूडेंट का जो पर्सपेक्टिव रहता है वो डिफरेंट रहेगा, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट मेथड्स एंड अप्रोचेस विच आर ओपन टू स्टूडेंट। और इसी की वजह से लैक ऑफ हैविंग यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिंगल मेथड पॉलिटिकल साइंस कभी साइंस नहीं कहलाएगा। Next we have is that political principles are not universally accepted and applied. Very true that in political science, whatever the principles of the political science are, they are not universally accepted or not even universally applied, because all the political principles varies from region to region and subject to subject within the political science. चौथा जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो पॉलिटिकल साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं हैं, और इसीलिए वो यूनिवर्सली अप्लाइड भी नहीं कर सकते। उनकी जो एप्लीकेशन रहेगी, उनकी जो एक्सेप्टेंस रहेगी, वो वेरी करेगी सोसाइटी टू सोसाइटी, स्टेट टू स्टेट या फिर डेमोग्राफी टू डेमोग्राफी। और इसी के चलते पॉलिटिकल साइंस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूनिवर्सल accepted principles in the subject cannot be called as a science. Fifth very important point we have is that the principles regarding rights and obligations of the individuals are not fully accepted by all political thinkers. Very true. In fact, within political science, when it comes to certain rights, when it comes to obligation which every individual need to fulfill, we have a lot of differences among the political thinkers. In political science, most of the political thinkers have their own understanding when it comes to certain rights as well as certain obligations, and this basically shows that they don't have a common understanding among the political thinkers when it comes to certain important rights, and therefore political science cannot be a science. पांचवा जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो प्रिंसिपल्स है एक राइट्स के या फिर एक ड्यूटी के या फिर एक ऑब्लिगेशंस के, जो एक इंसान का जो कर्तव्य रहता है एक सोसाइटी में, उसी के चलते आगे जो पॉलिटिकल थिंकर्स है उनके बीच में कोई कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इंसान के राइट्स क्या होने चाहिए। हर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट का यही कहना है कि कुछ ऐसी राइट्स भी होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है इंसान के लिए, वैसे दूसरे पॉलिटिकल साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि सर्टेन राइट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। सो
जब हम राइट्स के बारे में बोलते हैं या फिर सर्टेन ड्यूटीज़ के बारे में बोलते हैं, तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बीच में वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कौन से राइट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कौन से ऑब्लिगेशंस बहुत इम्पोर्टेंट है। और यही जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है पॉलिटिकल थिंकर्स में regarding the simple principles of rights and obligations shows that political science is not a science because of the differences. 6, we have the meaning of different words and expressions have created sharp controversies among political scientists. Very true. When it comes to certain words, when it comes to certain expression and related to the meaning of these words, we have seen that there are controversies among the political science. There are various concepts we have in political science, and these concepts have been defined by various political scientists from their own perspective, and many a time these words have a different meaning altogether. For that matter, let us say, how do one understand a liberty? How do one understand a justice? Now, if you go back to the basics of political science, then liberty and justice have been expressed by various political scientists from their own understanding. And one thing which we find common among all the political scientists is that they don't have any common understanding or a definition when it comes to certain words, whether it is justice or a liberty. And therefore, because of these controversies over certain words and certain expression among the political scientists has led to define that political science is not a science. 6, जो बहुत important point यहाँ पर ये है कि ये कहता है कि जो पॉलिटिकल साइंस में थोड़े कुछ वर्ड्स रहते हैं या फिर एक्सप्रेशन है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है, और उसी के कंट्रोवर्सी के चलते हुए जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है उनके बीच में बहुत डिफरेंसेस आते हैं। और ये अमूमन वेरी ट्रू है। जैसे मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल लिबर्टी या फिर जस्टिस ले लो या फिर कौन सा भी कॉन्सेप्ट ले लो, ये कॉन्सेप्ट वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। जैसे कि इफ़ यू गो बैक इन द हिस्ट्री ऑफ अ पॉलिटिकल साइंस, then we have various scholars such as Plato, Aristotle, and they define and they support certain idea as a good for society. लेकिन जब हम वो कॉन्सेप्ट आज की तारीख में जब अप्लाई करेंगे तो हमें वो कॉन्फ्लिक्ट दिखने को मिलेगा कि वो चीज़ें जो उन्होंने 1000 साल पहले जो बोली थी वो हम आज के स्थिति में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसी के वजह से बिकॉज ऑफ द controversies among the political scientists over the simple meaning of a different words and expression have declared that political science is not a science. Next we have terms like imperialism, democracy, communism, socialism, liberalism and nationalism do not have uniform definition, and that is very true, that when it comes to the terms like imperialism, democracy, communism, socialism, liberalism and nationalism, they have all different definition according to their own understanding and according to their own perspective. Somebody from one country might define nationalism in one way, whereas somebody else will define nationalism in another way. And again, this is another example to show that universally we don't have common understanding, or we do not have universal common methods to understand these terms, because the terms varies from region to region, from state to state. 7वां जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो पॉलिटिकल साइंस में जो टर्म्स है, जैसे कि इम्पीरियलिज्म ले लो या फिर डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म या फिर नेशनलिज्म ले लो, इनकी जो ये जो टर्म्स है इनका कोई यूनिवर्सल डेफिनेशंस नहीं है। हर एक का डेफिनेशन चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। नेशनलिज्म हमारे तरफ से डिफरेंट रहेगा, हमारे पड़ोसी देश की तरफ से नेशनलिज्म डिफरेंट रहेगा। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो डिफरेंट डेमोक्रेसी है, लेकिन जो हमारे पड़ोस में जो डेमोक्रेसी चल रही वो डिफरेंट है। कई स्कॉलर कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हैं तो कई स्कॉलर कम्युनिज्म के अगेंस्ट बोलते हैं। देयर वर सम कंट्रीज हु यूज्ड टू सपोर्ट इंपीरियलिज्म, और उसी दौरान दूसरे देश थे वो इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट थे। सो ये बात हमें बताती है कि
ये जो टर्म्स है पॉलिटिकल साइंस में, इनका कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, इनका कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है, और इसी के चलते पॉलिटिकल साइंस का भी साइंस नहीं कह सकता. Next we have is point number 8, which says that it is not possible to have a laboratory experiments in political science. Very true that most of the scientists are saying that political science is not a science because they don't have a laboratory. Because if you want to conduct an experiments, you need to have a laboratory, and political science does not have a laboratory. 8वां जो पॉइंट है वो स्पेसिफिकली कहता है कि पॉलिटिकल साइंस में कोई लेबोरेटरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. वहाँ पर कोई लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर सकता है, और लेबोरेटरी नहीं है पॉलिटिकल साइंस में, इसलिए पॉलिटिकल साइंस कभी साइंस नहीं बन सकता है. नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 9, एंड इट सेज दैट द पॉलिटिकल रिसर्चर्स हैज़ टू डील with a human being, while the researchers in the physics and chemistry experiments with inanimate substances. Very true that when it comes to political science, they have to deal with the human being. The researchers in political science have to deal with the human being, whereas the researchers in the physics and chemistry, they carry out their experiments with inanimate substances. So therefore political science cannot be a science because they cannot conduct the same kind of experiments the way physics and chemistries are conducting on inanimate substances. नौवां जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पॉलिटिकल साइंस के जो रिसर्चर्स है वो अमूमन इंसान से जुड़ा रिसर्च करते हैं, और जो प्योर साइंसेस है जैसे कि फिज़िक्स केमिस्ट्री, इनका जो एक्सपेरिमेंट करने का जो तरीका है वो विद इनएनिमेट सब्सटेंस के साथ वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिनका कोई इमोशंस नहीं है, वो सिर्फ रिएक्ट करते हैं. और इसी के चलते साइंटिस्ट का ये कहना है कि पॉलिटिकल साइंस कभी साइंस नहीं कह सकता है, क्योंकि ये इंसान से जुड़ा है, ये इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता है जैसे कि ये करते हैं फिज़िक्स या फिर केमिस्ट्री में. क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट रहता है ये एक ऐसे सब्सटेंस के ऊपर रहता है जिसका कोई इमोशंस नहीं है, बल्कि इंसान के बहुत इमोशंस होते हैं, और इसीलिए पॉलिटिकल साइंस कभी साइंस नहीं कह सकता. नेक्स्ट वी हैव दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट लाइक वन अनदर. इवन द सेम ह्यूमन बीइंग डज नॉट बिहेव इन द सेम मैनर एट ऑल टाइम. नाउ हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट there is another argument which says that all human beings are not the same, they are different. Even if the same human being, if you see, they will have a different behavior altogether, and their behavior will keep on changing all the time, and therefore human being cannot be part of the experiments in the sciences. इनका कहना ये है कि हर एक जो इंसान है ये बहुत डिफरेंट है हर एक तरह के से. कोई भी इंसान दूसरे इंसान की तरह सेम नहीं है. अगर सेम भी निकला तो उनका जो सोचने का जो तरीका रहेगा, उनका जो बिहेवियर रहेगा, उनके जो मैनर्स रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे. और यही कारण है कि पॉलिटिकल साइंस का भी साइंस नहीं कह सकता है, क्योंकि साइंसेस में जो सब्सटेंसेस है दे ऑल आर सेम, दे रिएक्ट एग्जैक्टली डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंट विच केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पीपल आर कंडक्टिंग, और इसीलिए पॉलिटिकल साइंस का भी साइंस नहीं कह सकता. नेक्स्ट वी हैव इज दैट पॉलिटिकल एक्टिविटी कैनॉट बी गिवन अ मेड टू ऑर्डर शेप. यस, in political science you cannot give an order to carry out certain activities which have been planned accordingly, and there is no way you can conduct certain activities in political science the way it has been planned or the way it has been strategized. It will go out of the hand, it will go out of the shape, and therefore political science again cannot be a sciences, because in sciences everything can be controlled, everything can be ordered to control to achieve certain shape or to achieve certain conclusion. Whereas in political science the political activities especially cannot be given an order to react in such a way, and therefore political science cannot be a science. ये जो पॉइंट है ये कहता है कि
जिस तरह पॉलिटिकल साइंस में या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो भी कुछ प्लान किया होगा एक्टिविटी के लिए, आपने जो भी कुछ स्ट्रेटजी बनाई गई होगी कि इस तरह से ये मोड लेगा, इस तरह से इसकी शेप रहेगी, वो कभी भी वैसे नहीं निकलेगी। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में अमूमन हम इंसान से डील करते हैं, उसके इमोशन से डील करते हैं, और उसी की वजह से आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप साइंसेस में देखेंगे तो साइंसेस में जिस तरीके से जो स्ट्रेटजी वर्कआउट की है, जिस तरह से प्लान किया है, उसी के चलते वो एक्सपेरिमेंट वो कंडक्ट करेंगे और वो कंट्रोल में या फिर कौन से भी शेप में वो उसको ढाल सकते हैं। whereas the political activities cannot be given any man-made order or any shape for that matter, and therefore political science cannot be a science. Now next we have is a 12th point which talks about that emotions and actions of the man cannot be controlled, and that is true. Therefore these studies cannot be a science, because in sciences you can control any emotions for that matter or any action of these inanimate substances, whereas in political science you cannot control, and therefore political science cannot be a science. जो इमोशंस या फिर जो एक्शन होते हैं इंसान के, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये इन्फ्लुएंस होते हैं बिकॉज ऑफ द सोसाइटी वेयर दे आर लिविंग इन, और ये जो उनके इमोशंस है या फिर एक्शंस है, ये हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस तरीके से लेबोरेटरीज़ में, साइंस के लेबोरेटरीज़ में जो इनएनिमेट सब्सटेंसेस रहते हैं, उनके आप एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके इमोशंस को भी आप कंट्रोल में कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा एक्सपेरिमेंट एक लेबोरेटरी में होता है। और यहाँ पर जो इंसान है वो कोई लेबोरेटरी में नहीं है, और इसी के वजह से पॉलिटिकल साइंस जो है वो ये कभी साइंस नहीं कह सकता। Next we have a very important point that atmospheric pressure and temperature can be measured, but the intensity of political reaction or forces cannot be measured. Again, this is a very important point to define that political science is not a science, because in pure sciences we can measure the atmospheric pressure, we can measure the temperature, but it is very difficult and impossible to measure the intensity of the political reaction and the forces. So therefore political science is not an science. जहाँ तक ये पॉइंट का जो इशू है कि साइंसेस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है या फिर जो टेम्परेचर रहता है वो आप मेजर कर सकते हो, लेकिन जो पॉलिटिकल इंटेंसिटी जो रहेगी, पॉलिटिकल रिएक्शन जो रहेगा या फोर्स का जो रिएक्शन रहेगा, वो आप कभी भी लेबोरेटरीज में मेजर नहीं कर सकते हैं। और जो चीज़ आप मेजर नहीं कर सकते वो साइंस नहीं कह सकता है, और इसीलिए पॉलिटिकल साइंस कैनॉट बी अ साइंस। And the next very important point we have that a political scientist cannot duplicate laboratory experiment as in the case of chemistry or physics. Very true. In real sciences या फिर in real pure sciences you can always duplicate the laboratory experiments 100 times or even 1000 times, and the results would be same as you have been doing it for generations and generations. Whereas when it comes to political science, you cannot duplicate the reaction of the political scene the way you duplicate it in chemistry or physics. In political science, you cannot duplicate the events which are happening. You will find the differences, you will find the different findings every time as and when you wish to duplicate the political incident within the political science, and therefore political science cannot be a science. जो political scientist है वो जो रिएक्शन आते हैं political science में उसका डुप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग को इन्वॉल्व करते हैं, और बिकॉज ह्यूमन बीइंग कीप्स ऑन चेंजिंग you cannot duplicate the emotions or the reaction of the same person same way जिस तरीके से आपने उसको पहले बार किया होगा। ये पॉसिबल सिर्फ
केमिस्ट्रीज और फिज़िक्स में है, जहाँ पर आप हर एक एक्सपेरिमेंट हज़ारों लाखों बार दोहरा सकते हैं और उसकी जो फाइंडिंग्स रहेगी वो सेम रहेगी। बल्कि जो पॉलिटिकल साइंस की एक्टिविटीज़ है वो उसको आप बार बार दोहरा नहीं सकते। फिर भी अगर आपने कोशिश किया उसको बार बार दोहराने की, जो उसका जो फाइंडिंग्स रहेगा, उसका जो प्रोसीजर रहेगा वो पूरा चेंज रहेगा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली इंसान से जुड़ा हुआ है और इंसान जो है वो बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इनएनिमेट सब्सटेंसेस। And therefore, moving on to the second last very important point, that political conditions cannot be artificially created, as human being cannot be treated as lifeless tools. Very simple, that in sciences you can create any artificial condition, you can control any artificial condition depending upon your project, depending upon your research. Whereas in political science, you cannot create the same condition artificially again and again, and even if you try to do so, as I said, the findings would be different, because here we are directly dealing with the human being who cannot be treated as a lifeless tool. और ये पॉइंट कहता है कि जिस तरह से हम साइंसेस में कुछ आर्टिफिशियल कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वैसा आप पॉलिटिकल साइंस में नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का जो कंडीशंस है ये कोई आर्टिफिशियल कंडीशन आपको क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इंसान का रोल होता है। अगर आप चाहो तो कंट्रोल करने की कोशिश भी करेंगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि ये सीधा ह्यूमन बीइंग से जुड़ा हुआ है और आप ह्यूमन बीइंग को एक लाइफलेस टूल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। एंड द लास्ट वी हैव a very important point which says that identical social, political, economic conditions cannot be reproduced for experimentation at the will of the political scientist or a politicians or a government. And the last very important says that you cannot create any identical social, political or even economic condition to reproduce the same experiment again and again. As I have said earlier, that you are dealing here with the human beings, and human beings will react to various situations differently. You cannot expect him or her to react same way the way he or she have reacted earlier to certain situation. This thing happens only in sciences, because in sciences you can reproduce the same kind of an experiment again and again with same kind of a finding. But in political science it is really difficult to have same kind of a experiment or to reproduce same kind of an experiment, only because it is dealing with the human being. So these are some of the 16 most important arguments given in favor of rejecting political science as a science. So I hope you have understood the first part of the political science, that political science is not a science. In next tutorial we shall talk about the argument in favor, like how political science and why political science is actually a science. So I will see you in next tutorial. Till then, take care.